Hello dear friends, how are you? I am Satyanarayan, a 2019 batch IPS, and as you all know that current affairs plays a major role in the preparation of UPSC civil service exam. So whether it is the prelims exam or the mains exam, a major chunk of questions are asked from the topics which are in the news in recent times. Okay, so I thought that we should start a current affairs series in which we will be covering the major important issues which are directly related to the syllabus and which are in the news. So we'll start with the labor laws amendments made by different states just last week. And as I also say that before reading anything, we should relate the corresponding topic in the syllabus. So this labor law topic is asked in GS3 paper, and the syllabus in the syllabus it is mentioned. The topic is Indian economy, its issues relating to like development and employment. So here it is directly relevant. This will be asked in this particular topic. Okay, so now let's start this first video in this series. And first we should know that why it is in the news, because last week many of the state governments including the Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Gujarat, Punjab, Rajasthan and Odisha, they made some changes with respect to the labor laws which are applicable in their respective territories. So what are those labor laws and what are the major labor laws in the India, and how these changes are going to impact the firms and the workers and the overall economy. So this we will discuss in this particular video. So the first thing is that what are the different labor laws in India? So there are around lagbhag 200 state laws and around 50 central laws. As we know that the labor is a subject in the concurrent list. So there are three lists: central list, state list and the concurrent list. So this labor topics lies in the concurrent list. So both the center and the state has the power to make the laws, and if we divide all these laws, then we can divide them in particularly four categories. So here it is mentioned the condition of the work, then the acts relating to the wages and the remuneration, then to the social security and employment security and industrial relations. So for example, the conditions of work in this particular category, there is the act, Factories Act. So what is the aim of this Factories Act? It is to ensure safety measures on factory premises of the workers and promote their health and welfare. So जो भी workers factories में काम करते हैं, उनके जो safety है और जो उनका health है, उस और जो welfare है, that is their कल्याण, तो उसके लिए जो है ये Factories Act इनेक्ट किया गया है. सिमिलरली जो उनको मिलने वाली जो पगार है या जो वेजेस हैं, उसके रिगार्डिंग भी जो मिनिमम वेजेस होते हैं कि न्यूनतम इतना भत्ता उनको मिलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग जो लॉ है वो है मिनिमम वेजेस एक्ट. ओके, and one another important act is the Industrial Dispute Act. So this is with respect to the relation of the industrial employers as well as the employees, and it is mentioned that this is a contentious labor law, यानी कि इस पे बहुत सारी controversy है, and the reason for that is that it relates to the terms of service such as layoff, retrenchment and closure of the industrial enterprise, strikes and lockouts. So ये जितने भी issues हैं, यानी कि अगर आपने कोई employee को employ कर रखा है, if you want to lay him off, यानी आप उसको छोड़ना चाहते हैं, या फिर आप जो है अपनी जो organization है उसमें वर्कर्स की संख्या कम करना चाहते हैं, या फिर अगर आप अपना इंडस्ट्रियल यूनिट जो है बंद करना चाहते हैं, हड़ताल वगैरह जो होती है, तो इन सब से रिलेटेड जो एक्ट है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट. सो इस तरीके से वी कैन डिवाइड देम इन द फोर कैटेगरीज, एंड प्रेजेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू कोडिफाई ऑल द लेबर लॉज इन दिस फोर कैटेगरीज. Okay, so that is also an important aspect, but we will not discuss that issue here. Now, बहुत सारी बार जो है it is said that the labor laws in India are inflexible. So there are lots of criticism around the labor laws. So what are the particular facts around which the labor laws in India are criticized, we will see. So the first thing is that it is said that they are too much in number, यानी कि बहुत सारे numbers हैं, बहुत सारे law हैं, उसकी वजह से जो है unnecessary complications होते हैं, and उनका जो effective implementation होता है वो नहीं हो पाता, और उसकी वजह से जो है वो करप्शन, जिसको हम इंस्पेक्टर राज कहते हैं, या जो रेंट सीकिंग है, ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो आती है. उसके अलावा जो है कि बहुत सारे जो लॉज हैं दे पुट्स सर्टेन लिमिट्स. फॉर एग्जांपल, देयर इज अ लॉ व्हिच पुट्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज if any organization is employing more than 100 workers. So if they want to release the workers or if they want to hire new workers, then they need to take the approval from government. Okay, so इसकी वजह से
आपका जो अप्रूवल है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर द इंडस्ट्रीज. एंड फॉर एग्जांपल दिस चार्ट आल्सो शोज दैट बिकॉज द लेबर लॉज इन इंडिया आर वेरी इनफ्लेक्सिबल, दे आर रिगरस, तो उसकी वजह से जो है वो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट करना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन टेकिंग द permanent employees. So this is the figure given that in 2004 there were around 1.31 crore formal sector employees. That is sorry, in the formal sector there were around 1.31 without contract. So जो बिना कॉन्ट्रैक्ट वाले जो एम्प्लॉयज थे उनकी संख्या 1.31 करोड़ थी, जो अब जो बढ़ के है वो 3.61 करोड़ हो गई है. और जो कॉन्ट्रैक्ट वाले जो वर्कर्स हैं उनकी संख्या 2.28 करोड़ थी इन 2004. सो 2017 में वो सिर्फ 2.8 करोड़ तक ही बढ़ पाई है. तो हम देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज वगैरह जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लेना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट. सो इसकी वजह से जो है वो ग्रोथ की फर्म्स है उसकी ग्रोथ भी नहीं हो पाती है. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज नहीं रखना चाहेगा, क्योंकि जो बाद में लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो उनको फॉलो करनी पड़ती है. तो ये जो है एम्प्लॉयज हैं, उन जो इंडस्ट्रीज हैं उनके भी एक तरीके से इंटरेस्ट में नहीं है, एंड इट इज ऑल्सो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स. सो जो वर्कर्स हैं उनको भी बहुत सारी सोशल सिक्योरिटीज वगैरह जो है वो नहीं मिलती है. तो essentially if India had fewer and easier to follow labor laws, so it is argued, ऐसा कहा जाता है कि अगर भारत में जो लेबर लॉज है उनकी संख्या कम होती और अगर उनको फॉलो करना इजी होता तो जो कंपनीज है या जो फर्म्स है दे वुड एबल टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशंस. सो जो भी मार्केट की कंडीशंस है उसके हिसाब से वो वर्कर्स को रख सकते थे, एंड उसकी वजह से जो है वो फॉर्मलाइजेशन जो इकोनॉमी का होता है वो भी संभव हो पाता. एंड वी नो दैट प्रेजेंटली 90% ऑफ इंडियाज वर्कर्स आर इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, यानी कि जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी और जो आप मिनिमम वेजेस वगैरह होते हैं या आपको जो जॉब सर्टेनिटी होती है वो सब चीज़ें नहीं है. सो अराउंड मोर देन जो आपका वर्क फोर्स है इंडिया में दैट इज एम्प्लॉयड इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी. सो जो आपके रिगरस लेबर लॉज है उसकी वजह से इंडिया का जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर है वो भी नहीं हो पाया है. अगर ये सब नहीं होता तो इट वुड हैव बीन पॉसिबल. So the main purpose for which these changes have been made is to revive the economic growth in the country, because due to the COVID-19 crisis and the lockdown, the economic activity has taken a sharp hit. So उसकी वजह से बहुत सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज है वो लगभग बंद होने की कगार पे हैं. तो उनको वापस रिवाइव करने के लिए डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ये मेजर्स लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल जो उत्तर प्रदेश सरकार है उन्होंने ऑलमोस्ट सारे लेबर लॉज जो हैं वो फॉर द टाइम बीइंग हटा दिए हैं, इंक्लूडिंग द मिनिमम वेजेस एक्ट. सो द पर्पज इज टू रिवाइव द इकोनॉमिक एक्टिविटी. हाउएवर द एक्सपर्ट्स आर सेइंग कि इसका जो इम्पैक्ट होने वाला है वो ये है कि इट विल क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट फॉर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स. सो जो एम्प्लॉयज हैं वो दे कैन इजीली फायर ऑल देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज एंड दे कैन रीहायर देम एट लोअर वेजेस, बिकॉज जो उनकी बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाएगी. And the removal of all the labor laws will not only strip the labor of its basic rights, जो उनके basic rights होते हैं workers के regarding the social security, minimum wages, job security, वो सब जो है वो हट जाएंगे. and इसकी वजह से जो है वो उनका जो भत्ते हैं वो भी कम हो जाएंगे, their wages will go down. So the experts are raising this question that what will stop any firm from doing these tactics or adopting these tactics. And it is also said this move will in one go turn all the existing formal workers into informal workers. So because अभी जो formal sector में जो employees हैं वो भी एक तरीके से फिर contract labor के through they will be hired by the industries, and the number of the informally employed people it will go up, and there will not be any social security measures available for the employees. So these are the concerns which has been raised by the experts. Now why the wages will fall? So it has been explained that this chart shows that even before the COVID-19 crisis, due to deceleration in the economy, जो economic growth इंडिया में continuously कम हो रही थी उसकी वजह से जो wage growth है वो moderate हो रही थी. So we can see it in the graph that in the financial year from 2001 to 2005 it was around 4% the wage growth. Wage growth means the growth in the increase in the wages. जो आपके भत्ते बढ़ने की जो दर है वो 4% थी, that increased to 8.1% for 2006 and 10. 2011 से 15 के बीच में it was 11%, but 2016 से 18 के बीच में it reduced to 6.5% because there was already a deceleration in the economy. यानी जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था जो है इंडिया की वो धीमी हो रही थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है.
उसके अलावा देयर वाज ऑलवेज अ वाइड गैप बिटवीन द फॉर्मल एंड द इनफॉर्मल वेजेस रेट. सो फ्रॉम इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ, अगर ये जो एक अर्बन सेटिंग में काम करने वाला अगर मेल एम्प्लॉय है उसकी अगर तनख्वाह 100 है, तो जो एक रूरल सेक्टर में एक महिला जो है उसकी तनख्वाह सिर्फ 22 यूनिट होगी, यानी कि 5 गुना कम लगभग. सो दिस हैज बीन गिवन explained in this example that if a woman working as a casual laborer in rural India, she earns only 20% of what a man earns in the urban formal setting. So there was always a gap between the formal and informal rural and urban areas, and this gap will now be more. It will increase now. So if all the labor laws are removed, most employment will effectively turn informal and bring down the wages rate sharply. So we can easily understand it that जो इनफॉर्मल सेक्टर होता है आपका उसमें वेजेस कम होते हैं, उसकी वजह से जो है अगर इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ेंगे या कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे बढ़ेंगे तो जो ओवरऑल वेजेस हैं एम्प्लॉयज के लिए वो भी कम हो जाएंगे. एंड उसके साथ साथ देयर विल बी नो वे फॉर द वर्कर्स टू सीक एनी ग्रीवांस रेड्रेसल, यानी कि जो उनके कंसर्न है या जो उनके मुद्दे हैं वो भी दे कैन नॉट हैव एनी ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म, बिकॉज स्ट्राइक्स वगैरह भी वो कर नहीं पाएंगे या फिर देयर विल बी no relief for them. So this is the major concern regarding the changes in the law. So what could the different governments have done differently, यानी कि जो किया है उसके अलावा क्या कर सकते थे, या फिर there is a question कि क्या ये जो changes किए हैं इसकी वजह से जो economic growth है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी. So to answer this question, the expert has said that theoretically it is possible to generate more employment in the market with fewer labor regulations. यानी कि जो लेबर रेगुलेशन है अगर वो कम होते हैं तो थियोरेटिकली इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज. हाउएवर जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है या जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें देयर इज वेरी लेस चांसेस ऑफ any increase in the employment because of several reasons. So क्या क्या वो reasons है, let's see here. So the one reason is that there is already too much unused capacity, because जो industrial activity है वो एक तरीके से रुकी हुई है, जो इकोनॉमिक साइकिल जो है वो एक तरीके से डिसरप्टेड है, तो जो बहुत सारे ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी कोई यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है. एंड फर्म्स आर शेविंग ऑफ सैलरीज अप टू 40% एंड मेकिंग जॉब कट्स. एंड वी नो दैट एंड वी ऑल्सो रीड इट इन द न्यूज़पेपर्स दैट बहुत सारी जो कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरीज वगैरह कम कर रही हैं या होल्ड कर रही है या फिर जो है वो जॉब कट भी कर रही हैं. So this is further it will result into the so the overall demand for the workers that will decline, and which firm will hire more employees right now. So this is the major important question कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी जब रुकी हुई है या बहुत कम जब हो रही है तो कौन सी ऐसी फर्म्स होगी जो नए एम्प्लॉयज को लेना चाहेगी, क्योंकि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उनके लिए भी उनको सैलरीज दे पाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. एंड अगर it is said by the experts that if they want to increase the economic activity or if they wanted to increase the job level, so what they could have done is that the states should have not increased the shift duration from 8 hours to 12 hours, and rather than that अभी जो present time में है the state governments has said that they will increase the shift hours from 8 hours to 12 hours. So 8 घंटे से 12 घंटे तक काम करवाए जाएंगे, लेकिन इसकी बजाय ज़्यादा ये हो सकता था कि there should have been allowed 2 shifts of 8 hour each. तो जो भी एम्प्लॉयज होंगे वो लगभग डबल हो सकते थे इस तरीके से. सो द इकोनॉमिक एक्टिविटी वुड आल्सो गो ऑन फॉर 16 hours and similarly 2 employees can be employed for a particular job. Okay, so in that manner more people could have get a job. So this is the argument given by some of the experts that this is the possible option which the government could have taken, and this move and the resulting fall in the wages, it will further depress the overall demand. See, the economic activity is already at its downward level या बहुत ही कम है, और अब अगर फर्दर जो है लोगों के पास इनकम नहीं होगी या सेविंग्स नहीं होगी तो उसकी वजह से जो ओवरऑल जो डिमांड होती है आर्टिकल्स की या जो कंजप्शन डिमांड होती है, कंजप्शन लेवल होता है, दैट विल ऑल्सो बी लो. ज़्यादा डिमांड रहेगी नहीं मार्केट में, and it will again impact the economy, because when there will be no demand then there will be no economic activity, so it will overall hurt the recovery process. So this measure may hurt the economic recovery, it is argued by the experts, and the government should have partnered with the industry and allocated 3 to 5% of the GDP towards sharing the wage burden and ensuring the health of the laborers. So this is the recommendation which is given, that rather than taking these steps to changes the labor law or to suspend the labor law, what government could have done is that they should have partnered with the industry and they should have asked the industry that yes, we will take the, or we will share the burden of the salaries of the employees, and we will also
ensure the health insurance to them, because if the employees or if the laborers they get caught by this disease COVID-19 or any other disease, then it will become problematic for them. So they should have been given the health insurance cover as well. Okay, so this is the entire article which was published in Indian Express, and it is a very beautiful article. I have tried to summarize it, and I have also tried to make the notes, short notes. So if you people want the notes of this, you can join the Telegram, whose link is provided in the description section. So I hope that you people like this video, and you people want me to continue this current affairs series, and please click on the like button and share it with your friends and subscribe to the channel. I hope that you will do that. You'll definitely write in the comment section that how did you like the video, आपको ये video कैसा लगा, and should I make such more videos on the current affair topics. Thank you. Have a nice day.